Hello students and welcome to my channel Learn with Nisha ji. Today we are going to study the topic 3.5, that is the molecular mass. So if you want to complete the syllabus of class 9 science, you can subscribe my channel and get regular uploads for the videos, right? So we begin with 3.5 molecular mass. So in the previous section we have discussed the concept of atomic mass. अगर आपने वो lecture नहीं देखा है तो just go through that also. Okay. So now we are extending the same concept to molecular masses. Okay. So molecular mass of a substance is the sum of the atomic masses of all the atoms present in a molecule of the substance. ठीक है, जैसे suppose H2O है, H2O is a molecule. तो हाइड्रोजन एटम्स का मास प्लस ऑक्सीजन एटम्स का मास हम जब ऐड करेंगे तो we get the molecular mass. Okay. So it is a relative mass of a molecule and it's expressed in atomic mass units. In short, we write it as U, right? So let's understand this better through an example. So for example 3.1, the first part is we have to calculate the relative molecular mass of water, H2O. So atomic mass of hydrogen is 1 unit. Oxygen it is 16 units. तो total हम कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन के 2 atoms हैं. So we multiply this 1 unit by 2 and 16 by 1 only क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही atom है. We add this, we get 18 units. तो ये relative molecular mass है water का, right? Next is calculate the molecular mass of HNO3. HNO3 का हम कैसे find out करेंगे? इसमें 3 additions होंगे, hydrogen atoms, nitrogen atoms and oxygen atoms. Correct? हाइड्रोजन एटम का है 1 यूनिट, नाइट्रोजन का होता है 14 यूनिट्स और ऑक्सीजन का क्या होगा? सिंगल का 16 है तो 3 एटम्स का क्या होगा? 16 into 3, that's 48. So total becomes 63 units. Correct? Next comes the concept of formula unit mass. ठीक है? Formula unit mass of a substance is a sum of the atomic masses of all the atoms in a formula unit of a compound. Okay? It is calculated in the same manner as we calculate molecular mass. Okay? The difference is that we use the word formula unit for those substances whose constituent particles are ions. Okay? ये वर्ड हम यूज करेंगे उन कंपाउंड्स के लिए जिसमें आयंस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट. जैसे फॉर एग्जांपल NaCl. NaCl सोडियम क्लोराइड जो होता है दैट इज Na+ एंड Cl-. ओके, ये आयंस प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर. तो इसका फॉर्मूला यूनिट मास क्या होगा? सोडियम का होता है 23 और एक सिंगल एटम है सोडियम का तो 23 into 1. क्लोरीन का होता है 35.5 और सिंगल एटम है तो into 1. You add this, you get the total as 58.5 units. So here's the numerical. We have to calculate the formula unit mass of CaCl2. So it will be like calcium. Calcium का कितना होता है? 40 units. ठीक है? क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 और 2 atoms है तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. So total becomes 111 units. Right? इसमें आपको सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस पता होने चाहिए. ओके, तो एक आप टेबल बना के इसे लर्न कर सकते हो. प्रीवियस लेक्चर्स में ये अवेलेबल है टेबल. ऑलराइट, so thanks for watching the lecture and subscribe my channel Learn with Nisha ji for more updates.